When do the contents of the stomach go? Where do they come? जो है ना, ulcer in the posterior wall. Ulcer in the posterior wall में बेटा, what is lying posterior to the stomach? The posterior to the stomach is the mental bursa. ठीक है? So ये mental bursa में जो है, और कोई क्वेश्चन? Any other question बेटा? AMP बेटा मैं देखती हूँ, मुझे AMP नहीं समझ में आ रहा, या तो बीच में से कोई मिसप्रिंट हुआ है। एक सेकंड करें, मैं चेक कर लूँ MCQs, फिर मैं आपको बताती हूँ। pelvic outlet की boundaries. एक मिनट में आपको बताती हूँ। मैम डक्ट फॉर्मेशन वाले MCQ में AMP का डक्ट फॉर्मेशन, कौन सी डक्ट? दूसरा देखो, रिलेशन से रिलेटेड था, समथिंग लाइक structure of kidney. दूसरा निकालती हूँ, the statement about the inguinal canal is correct, उसके ऑप्शन में भी AMP था। अच्छा, देख लेते हैं। इंगुइनल कैनाल में, इंगुइनल कैनाल में भी AMP था।
पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज में भी एएमपी था, तो ओनली थिंग इसके मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा जिसमें मैं आपको ढूंढ के देती हूँ बेटा, यही तो होगा ही ना। कॉमन बाइल की फॉर्मेशन में भी था। अच्छा, middle part of the embryo formed by the internal state wall. मैम आवाज आपकी मेरी आवाज नहीं जा रही, वजह? बस अब आगे जरा ऊंचा बोलेंगे ना। अच्छा, मैं जरा ऊंचा, मैं एक्चुअली कुछ बोल अभी नहीं रही हूँ। बच्चों का क्वेश्चन था कि एएमपी क्या मुराद है, तो मैं वही ढूंढ रही हूँ कि एएमपी कहाँ है। चैट में देखना है। नहीं नहीं, मैं बच्चों से वैसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बता लूंगी, जरूरत पड़ेगी ना। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। एएमपी अच्छा जी, एएमपी बाइक डक्ट की फॉर्मेशन में एएमपी था। ओके, पेल्विक आउटलेट में भी था। चलो पेल्विक आउटलेट देख लेते, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है बेटा उसमें तो एएमपी नहीं है। बेटा जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं उसमें कहीं पे एएमपी नहीं है। मैंने क्वेश्चंस बना के मैडम गुलफ्रेन को भेज दिए थे। अब मैं दोबारा देखती हूँ उनको कि उन्होंने किसमें दिए हैं, क्या दिया है।
मैं देखती हूँ बेटा आज उन्होंने मेरे लिए गाना है ना हमारे में सच में है डी ऑप्शन ये है EMP। ये जो पिक्चर आपने ऊपर पोस्ट की है मैम लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड का पोस्टीरियर लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम होता है, लेकिन MCQ में इन फ्रंट वाला ठीक किया है। यस लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड का पोस्टीरियर लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम होता है। अच्छा, लेकिन MCQ में इन फ्रंट वाला अच्छा लेफ्ट क्रॉस ऑफ लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड ये देख लेते हैं। क्योंकि बेटा मैंने जो भेजी थी MCQs उसमें तो कहीं AMP नहीं है। अभी AMP क्या है आई हैव नो आइडिया। अच्छा सुप्रारेनल ग्लैंड देखना है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड। कॉमन बैलेट की फॉर्मेशन अभी मेरे पास कोई AMP नहीं है। सुप्रारेनल ग्लैंड में देखा है पैंक्रियाज सिक्रोइड अच्छा जी, तो सवाल क्या था? सवाल पे आ जाते हैं मैम। लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड का पोस्टीरियर लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम होता है, लेकिन MCQs में इन फ्रंट वाला ठीक किया है। हाँ तो बेटा दोनों एक ही बात है ना, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड के पोस्टीरियरली लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम होता है, ठीक है। तो दैट मींस कि जो सुप्रारेनल ग्लैंड है वो लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम के आगे पड़ा हुआ है। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट सुप्रारेनल लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम। मैं इसको आपको दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ। द स्टेटमेंट वाज द लेफ्ट ग्लैंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम। उसका मतलब है कि लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है? द पैराड्यूटनल ग्लैंड की रिपेयर में मैम इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड वेन दोनों का ध्यान रखना होता है। MCQs में दो ऑप्शन थी, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड आर्टरी दोनों। बेटा द फोल्ड जो पैराड्यूटनल फोल्ड है ना, दैट इज रेज्ड बाय द वेन, नॉट बाय द आर्टरी। Artery is lying deep to it, but the fold in itself is raised by the vein. So you have to be careful about the vein. Artery तो वहाँ पे पड़ी हुई है against the wall, वो भी पड़ी हुई है, but the fold is raised by the vein. ठीक है? One of the following about inguinal canal is correct. Its roof is formed by arching fibers of internal oblique and transversus abdominis. एंड AMP बेटा मैंने जो टाइप करके भेजा था उसमें AMP नहीं लिखा हुआ था। अभी AMP बीच में कहाँ से आ गया? आई हैव नो आइडिया। और बताइए।
कोई और बता दो बेटा, इससे पहले कि फिर हम शुरू करें, लेक्चर शुरू करें। बेटा फिर वही AMP, मेरे पास कहीं AMP नहीं है, मैं कहाँ से बताऊं उसका क्या मतलब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 के ऑप्शंस में भी AMP आया है 39 में। अच्छा, देखते हैं। बेटा मेरे पास AMP नहीं आया, AMP नहीं टाइप किया मेरा बेटा। ये कहाँ से आ गया कि मैंने ये पेपर बना के डॉक्टर गुलफरीन को भेजा था, वहां से क्या हुआ मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरे पास कोई AMP नहीं है। और बताओ, स्प्लीन के पोस्टीरियर रिलेशंस में तो रिब्स होती हैं, लेकिन MCQ में लेफ्ट किडनी था। स्प्लीन के पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या लिखा हुआ है मैंने, अब स्प्लीन के पोस्टीरियर रिलेशंस में ऑस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा होना चाहिए था। पिरावेना केवा, किडनी, सुप्रारेनियल ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर। स्टमक, पेट, इंटरनल, अच्छा। अच्छा जी, ढूंढ रही हूँ ढूंढ रही हूँ। What do you try? Pancreas. Left kidney is a posterior relation. अच्छा जी, आपका क्या प्रॉब्लम है? रेस्ट ऑन द हेपेटिक फ्रैक्चर नहीं, it has a costomediastinal recess नहीं, body of pancreas lies anterior to the spleen नहीं, टेल होती है। लेफ्ट किडनी इज अ posterior relation, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मसला ढूंढते हैं, मसला क्या हुआ। स्प्लीन के posterior relations में रिब्स होती हैं, लेकिन MCQ में लेफ्ट किडनी भी होती है, रिब्स भी होती हैं। ये ऑप्शन बेटा, बॉडी ऑफ पैनक्रियास लाइज एंटीरियर टू द स्प्लीन नहीं होता, टेल ऑफ पैनक्रियास बड़ी होती है। बॉडी ऑफ द पैनक्रियास का तो स्प्लीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। रिब्स की नंबरिंग गलत थी ऑप्शन में। जी बेटा बिल्कुल जानबूझ के दी हुई थी, क्योंकि ये गलत ऑप्शन बनानी थी, इसलिए रिब की नंबरिंग गलत दी हुई थी ना बेटे, बिकॉज इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन वो किडनी वाला था। लेफ्ट किडनी इज अ पोस्टीरियर रिलेशन, ये था। और बताओ। अच्छा, और बेटा आधा लेक्चर तो हमने इसी तरह ही जाया कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी क्वेरीज जो है उनको एड्रेस कर लें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी MCQs या SCQs, आई होप दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट। कैसे लगे आप लोगों को?
इसने नहीं जवाब दिया, कैसे लगे आपको? अच्छा चलो ठीक है। हेड ऑफ स्टमक इज फॉर्म्ड बाय, अब यहाँ पे कौन सी ऑप्शंस थी मैं देख के बताती हूँ। हेड ऑफ स्टमक में क्या पड़ा हुआ है? G स्टमक बेड। बेटा राइस प्रोसेस मेजर नहीं था, कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर नहीं था बेड में, हेड ऑफ पैनक्रियास बेड में नहीं था, ट्रांसवर्स कोलन भी बेड में नहीं था। ठीक है, तो बेड में एक ही चीज रह गई और वो था आपका सोअस मेजर, लेफ्ट सोअस मेजर। दैट इज वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द बेड ऑफ स्टमक। ठीक है, सोअस मेजर था। अच्छा, ट्रांसवर्स कोलन वाज मोस्ट सूटेबल, नहीं, इट वाज लेफ्ट सोअस मेजर। बेटा ट्रांसवर्स कोलन की जो कनकैविटी होती है ना, आपको अगर याद हो, ट्रांसवर्स कोलन इज कॉनकेव अपवर्ड्स, इसकी कॉनकैविटी में फिट्स द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ठीक है, उसकी कनकैविटी में आता है बेटा। सो अच्छा, और क्वेश्चन बेटा? और बताइए before we go ahead with the lecture. चलो जी, फिर हम क्लास शुरू करें। बच्चे जरा आना इधर, इसको अब वापस जूम पे, बातें तो हो गई इनसे, यहाँ से वो क्वेश्चन करने नहीं, मैंने लेक्चर देना है, हो गए ना क्वेश्चन। अच्छा, फिर से सेक्शन तो हो गया, अब मैंने लेक्चर शुरू करना है। अच्छा, स्क्रीन शेयर करें।
मैं मिल जाऊंगा जी मैनेजिंग जी आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया है Then, नहीं स्टार्ट करेंगे ठीक है मैं अच्छा जी so we finished with this cap ठीक है करना तो आज बहुत कुछ था हुआ कुछ भी नहीं आधा घंटा हमने now let's go on to the face. Face starts from where you have the hairline जहाँ बाल होते हैं आपके down to the chin. ठीक है ये extend है vertically from the hairline to the chin and extending from one ear to the other. ठीक है अब ये जो है ना जिसको आप ear कहते हैं external ear इस external ear को पिन्ना भी कहते हैं and it is also called auricle. ठीक है auricle is कान. So from one auricle to the other and extending from the hairline where you should have the hairline or up to the chin. ठीक है अब जो फेस के जो मसल्स होते हैं ना they are inserted they are attached at one end they are attached to the bones of the skull and at the other end they are attached either to the skin or the subcutaneous tissue. ठीक है और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेस है वो बोन से बना हुआ है बोन and then secondary पे added the amount of fat that you have. Abundance of fat, excess of fat एक different look देता है. When the fat disappears तो एक relatively different look देता है एक face जो है. और ये जो face के जो muscles होते हैं ना, they add expression to the face. इनकी contraction, इनकी relaxation से different expressions that you get are because of the contraction and relaxation of the muscles of the face. इसलिए इनको हम muscles of facial expression कहते हैं. अब जो face के जो muscles हैं, we divide वो जो upper lip ठीक है
upper limb के, I'm sorry, आपको इंटरप्शन आज बहुत है, for some odd reason इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है. Never mind. So we were talking about the muscles. Muscles. Upper limb के muscles. I told you the muscles of the upper limb are either the muscles that elevate the upper limb or they pull the upper limb back, meaning they are the retractors. Retract करते हैं, or they curl it up, evert करते हैं. And then of course lower lip की बात कर लेते हैं. This is the lower. They either depress the lower lip, depresses, once again retract, pull it back, or evert करते हैं. Then the muscle that acts as a sphincter to the oral cavity, this circular muscle is the orbicularis oris. Okay, it forms a sphincter around the oral cavity, and then don't forget the muscle of the cheek, which is the buccinator. ये deep down ये buccinator muscle है, ये जो नजर आ रहा है आपको. अच्छा जी. One by one, I'll do the important muscles with you. वैसे तो फेस पे बहुत से muscles हैं, but anyway. So, oris, this circular muscle is the orbicularis oris. It acts as a sphincter and it is lying within the lips, upper and lower lips. Okay? And acts as a sphincter. In fact, this is the first sphincter. GIT का जो सबसे पहला sphincter है, वो यही है, orbicularis oris. And I hope you appreciate, you understand if this muscle is encircling the mouth, goes round and round the mouth, and this muscle is important in articulation. Articulation से मतलब यहाँ पे है talking, बात करने. So बात करने में ये muscle बहुत, it plays an important role. अच्छा जी. दूसरा important muscle जो है, that is the muscle of the cheek, which is called buccinator. ये rectangular सा muscle होता है. This is the buccinator. Please note this. This is a rectangular muscle. ये जो muscle fibers हैं, ये वो भी the muscle that we just did few seconds ago, orbicularis oris, and this is the buccinator. Now, this buccinator muscle arises from these are the teeth. The teeth are inserted. This is the maxilla. आप लोगों ने skull पढ़ी है. This is the maxilla and this is the mandible. The teeth are inserted into the maxilla and into the mandible. The socket for the teeth, they are called the alveolar processes, जिनको हम layman's term में socket कहते हैं, socket for the teeth. ठीक है. So अब ये जो muscle है, which is called the buccinator, it's called buccinator because it is the trumpeter's muscle. जो trumpet बजाते हैं ना, bugle बजाते हैं, ये उनका muscle है, उनमें ये well developed होता है. I'll just discuss how it is so well developed. अच्छा जी, so it arises from the alveolar processes of the maxilla, from the alveolar processes of the mandible. Besides that, अब ये pterygomandibular raphe, यहाँ पे फेस में एक buccopharyngeal fascia होता है. Buccopharyngeal fascia जो है, इसके fibers they interdigitate and they form a raphe. Raphe, if you remember from your knowledge of general anatomy, raphe में interdigitating fibers होते हैं. This raphe, from which
से buccinator arise करता है. Now this raphe is pterygomandibular raphe. This is the pterygoid hook, जिसको हम pterygoid hamulus भी कहते हैं. Pterygoid hook shaped structure होता है. Pterygoid hook या pterygoid hamulus से extend करता है to the mandible. That is why this raphe is called pterygomandibular raphe. ये interdigitating fibers बेटा they develop because the buccinator muscle takes origin from it anteriorly. ठीक है? And this gray muscle, these are the superior constrictor muscles of the pharynx. So this raphe is formed because anteriorly from the raphe arises the buccinator muscle, and posterior to the raphe you have the origin of superior constrictor muscle of the pharynx, pharyngeal constrictor. Okay. Now, thing to remember is that this is a very deep muscle, deeply situated, so deep that इसके बाद अंदर से mucous membrane आ जाती है. All the muscles of the face are lying, covering it. ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए ये deeper muscle है. All the other muscles cover this muscle. So this is a deep muscle, deeply situated in contact with the mucosa of the mouth. Buccal is mouth cavity. So buccal mucosa, okay, this on the inside it is covered with the buccal mucosa. And also note that running anteriorly, this muscle merges or mingles with this orbicularis oris. Okay? So the buccinator anteriorly merges with or mingles with orbicularis oris. उसके अलावा at the angle of the mouth, यहाँ पे देख लीजिए ये angles of the mouth हैं, ठीक है? At the angles of the mouth, ये जो you have different fibers of buccinator running and interdigitating with each other over here, angle of the mouth. Besides that, there are different muscles, 9 other muscles that run into the angle of the mouth. They either insert over here or they arise from it and go to their insertions. So 9 muscles merge with the orbicularis oris and the buccinator. As a result, knot of muscles formed over here at the angle of the mouth. ये जो knot बनती है, a knot of muscles, this is called modiolus. Yeah, okay. Modiolus is simply a knot of muscles formed by 9 different muscles that get together or accumulate at the angles of the mouth. अब इस मॉड्यूलस की as such वैसे तो कोई importance नहीं, except कि अगर इसके fibers if they get separated, then तो the person develops dimples, जो गड़े पड़ते हैं cheeks में, dimples that you have. This is because of this muscle modiolus. Actions क्या है? एक तो ये देख लीजिए trumpetus muscle. अब उसमें होता ये है कि this muscle keeps the cheek pressed against the teeth. Now on the inside you have the tongue. Okay. In order to keep the food inside the teeth come together and the cheeks are pressed against the teeth. Otherwise, the food will come out and lie between the lips and the teeth. Yeah, between the cheek and the teeth. Between the cheek and the teeth and between the lips and the teeth, ये जो area है इसको vestibule of the mouth या oral vestibule कहते हैं. You have to keep the food out of this oral vestibule.
and inside the occlusal surface. occlude करना बंद करना है, दांत खींचने को, दांत जोर से when you press your teeth against each other, that is occluding the teeth. ठीक है? So you have to keep the teeth, you have to keep the food within this, within the inner surfaces, internal surfaces of the teeth. One of the important function is that it resists distension when blowing. देखो, when you blow, like when you blow a trumpet, you pull the teeth, the cheeks are pushed out. Okay. अगर ये vaccinator ना होता ना, तो excessive ballooning या excessive bulging out of the cheeks होती. This vaccinator keeps a check on excessive ballooning that may have that may occur during blowing. Besides, ये जो muscle है, this keeps the cheeks taut. Otherwise, ये mucous membrane जो है ना, ये सारा वक्त fold होके, you would keep on biting your mucous membrane. So this muscle, since the mucous membrane is attached to the inner surface of the muscle, so this muscle keeps the mucous membrane away from the teeth. And don't forget, it is a very important muscle for smiling. It is active in during smiling. इसकी nerve supply आती है facial nerve से. Facial nerve की buccal branch. बेटा, all the muscles of facial expression, all the muscles of the face are supplied by, the motor supply is by facial nerve. ठीक है, सिर्फ आगे से उसकी branches different है. Otherwise, the motor supply of the face, muscles of face or muscles of facial expression, they come from 7th cranial nerve, which is the facial nerve. CN over here, CN is cranial nerve 7, 5, 6, 7. Cranial nerve 7 is facial nerve. Facial nerve की जो buccal branch है, that supplies motor fibers to the muscles of facial expression. Platysma. Platysma ये देख लीजिए. This muscle is the platysma. ये sheet-like muscles. ठीक है. Now, कहाँ से आता है? From the deep fascia that covers the deltoid. ये deltoid है और ये pec major है. Rises from the deep fascia that covers the upper parts of pec major and deltoid और insert करता है angle of mandible पे. ठीक है, even to the lips, angle of the mouth पे भी जाता है. Lower margin of mandible और angle of mouth यहाँ पे. अब इसमें नहीं दिखाया हुआ, otherwise ये जो muscles of the two side at the chin, they overlap with each other. लेकिन midline में they leave an empty space, a gap. ठीक है, and through this gap emerges the Adam's apple. Okay. इसकी innervation once again is head and neck का muscle है, face पे भी आ रहा है. तो nerve supply is by facial nerve. ये facial nerve की यहाँ cervical branch से इसकी nerve supply आती है. Action, इसका main action जो है ना, when the upper part of the muscle contracts, तो ये vertical ridges produce कर रहा है. When the lower part of the muscle contracts, it depresses the chin and angle of the mouth. अच्छा जी. Muscles that open the orbit. Now, starting with the eyelids, eyelids का function क्या है? eyelid protection के लिए होती है, चाहे
protection from a glare, तेज रोशनी या हवा or whatever. ठीक है. And besides, the eyelids blink and they keep the cornea ये moist. The eyeball को moist रखने के लिए the eyelids keep on blinking. ठीक है. Now, before I go any further, let me introduce this term to you because you will come across this term very often. ये upper eyelid है. This is the lower eyelid. ठीक है. This space between the upper and the lower eyelid, ये सारी, in this space you have the white of the eye, in this space you have the rounded cornea, and this is the pupil. All this space between the upper and the lower eyelid, this is called palpebral fissure. But before I go any further, ये upper lid है, ये lower lid है, and all this is the palpebral fissure. And now remember one thing, when you close the lid, you cannot appreciate this fact, but when you close the lid, the movement of closing the lid starts at the lateral end. ये देखो बेटा nose है, so this will be the medial end. So the movement of closing the lid starts at the lateral end and gradually moves towards the medial end. अब इसकी वजह क्या है? फायदा क्या है? देखो, this is the lacrimal gland. On the lateral end of the eye, you have the lacrimal gland. Lacrimal gland is a structure where tears are produced. आंसू बनते हैं. And you can see these small ducts. So the lacrimal glands produce tears that pass via these ducts into the eye, on the surface of the eye. Without us realizing, the lacrimal gland keeps on producing tears that pass through these ducts, and by the blinking of the eye, because unconsciously we are constantly blinking, उस blinking की वजह से this film of tears covers the surface of the eye and prevents the eye from drying up. So these secretions of the lacrimal gland, which are the tears, they cover the surface of the eyeball and prevent it from drying, keep it moist. ठीक है, नमी इसमें कायम रखता है. अच्छा जी, ऑर्बिटल ओपनिंग कर लेते हैं. मसल्स ऑफ द ऑर्बिटल ओपनिंग. ठीक है, इस मसल का नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. ठीक है, ये सारा जो मसल है ना, इनसर्कलिंग द आई, ये सारा का सारा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है. अब ये इसके जो फाइबर्स है ना, दे encircle the orbit, margin of the orbit, and they also encircle the eyelid. ये देख लीजिए, ये भी फाइबर्स हैं इसके और ये भी फाइबर्स हैं. This is all one muscle having different parts. अब इसके तीन parts हैं. एक तो palpebral part. Palpebral, whenever you come across this word palpebral, it means eyelid. ठीक है, eyelid. Now, the fibers of this muscle, which is called orbicularis oculi, orbicularis oculi, they start from this ligament, ये जो whitish है. This is the medial palpebral ligament. ठीक है,
go round the eyelid. Start from the medial palpebral ligament and go round the lower lid. They go around the upper lid, and at the lateral border of the eye, they interdigitate with each other, okay, and form what is called the medial palpebral raphe. Okay? I repeat once again, the fibers that are present in the eyelids, upper and lower eyelids, are called make up the palpebral part of this muscle. This palpebral part starts from medial palpebral ligament, encircles the upper lid, encircles, goes round the lower lid, and at the lateral angle of the eye, the two types of fibers, upper lid and lower lid, they form interdigitate with each other and form a raphe, which is called lateral palpebral raphe. Function क्या है इसका? Gently closes the eye, as in blinking या sleeping, just eye, the two lids in contact with each other, like this. दूसरा पार्ट इसका जो है वो orbital part है, the main part है. Bulk of the muscle is made up of the orbital part. ये orbital part ये orbital margin को encircle करता है. ये margin of the orbit है ना बेटा? So it will arise from the margin of the orbit. It will arise the lower fibers and these fibers, the lower fibers associated with the lower lid, they arise from the maxilla. और यहाँ पे from the frontal bone and the orbit. यहाँ पे. So it goes all around and encircles the orbit. ये देख लीजिए, it is encircling the orbit. इसका function क्या है? Tightly close करता है eye, so that the lashes are actually buried inside. Like जिस तरह हम किसी तेज हवा से या तेज रोशनी से, in order to protect the eye, you tightly close your lids, tightly close your eye. Okay? That action is produced by the orbital part of the orbicularis oculi. इसकी nerve supply comes from the zygomatic branch of the facial nerve. All three parts. अच्छा, एक इसका तीसरा पार्ट भी है जिसको हम कहते हैं lacrimal part. अब बेटा, this is the lacrimal gland. ये lacrimal ducts हैं, जो lines नजर आ रही हैं. Lacrimal gland produces secretions that pass through the lacrimal ducts, covers the eye. Then these secretions, as the arrows show, follow the arrows, they are going medially. In the medially, you have the lacrimal sac. These secretions are then stored in the lacrimal sac and they go down. This is the continuous with the lacrimal sac is the nasolacrimal duct. मैं दोबारा repeat कर देती हूँ. Secretions from the lacrimal gland pass via the lacrimal ducts into the eye. Blinking of the eye will push these secretions medially, where they enter the lacrimal sac. They are stored in the lacrimal sac and then they pass down into the nasolacrimal duct. Naso means nose, lacrimal means obviously there's something to do with the tears. So since this nasolacrimal duct opens into the nose, तो इसको nasolacrimal duct कहते हैं. ठीक है? So we were discussing the third part. The third part जो है that यहाँ पे it is attached posterior to the fibers are deeper fibers. They are attached posterior to the lacrimal sac. ठीक है? So function in इस part का ये है कि it
draws the medial side of the eye. This This is the medial side of the eye. It pulls the medial side of the eyelids close, and when it pulls the medial side of the eyelid close, it compresses the sac. When the sac is compressed, the fluid in the sac, that is the tears, they pass down the nasolateral duct, and Oh, from there they मैम back. मैम लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है Okay, beta. Thank you. जी Thank you, my dear.